Hello, friends. Yes, come. I'm live. Come join fast. We are still dependent on net, electricity. So we have to go. Sometimes the time doesn't matches and the time is delayed because of that. We will continue with the book reading session we were doing, that is Power of Subconscious Mind, which is really giving power to so many people. I'm so happy to get the comments that yes, people have started changing their thought pattern. बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया है और इतना फायदा हो रहा है उनको, क्योंकि वो लोगों ने ये सोचा है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो गलत चीजें बैठ गई हैं उसको हटाना है, उसको चेंज करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसकी ही प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, उसी के कुछ टेक्निक्स हम सीख रहे हैं। जो लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज चैप्टर 6, वेयर वी वर स्टार्टेड विद प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स, कि हम अपनी जो हेल्थ को या मेंटली जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम किस तरह से प्रैक्टिकली कुछ टेक्निक्स अपनाकर ठीक कर सकते हैं। हाउ वी कैन क्योर आवरसेल्फ, हाउ वी कैन हील आवरसेल्फ बाय changing our thought pattern, by changing our mental situation. Mind, subconscious mind is thinking, what about our body, what about our organs, what about another person? Everything matters. That small small thoughts which you think at the time when you are talking with someone, when you are just sitting silently and observing yourself, what type of thoughts are working, all that matters. So friends, for that only we are here with the techniques which we have studied. I'll just revise one technique which we started, that was the passing away technique. The passing away technique is what? Just wherever the problem is there in your body, कहीं पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई पेन महसूस हो रहा है, तो आप जस्ट एक रात को सोते समय और सुबह उठते बराबर, दैट मीन्स व्हेन यू आर स्लीपिंग and when you are getting up in the morning, at that time you just at least minimum this 2 times, and rest all the full day if you are able to do it in between, and remind your mind. That also is very good technique. But just you have to tell that that particular part is clear and that problem is passed away, that problem is no more. That is, say you have a problem of sore throat, you can say that my sore throat problem is passed away. I'm perfectly all right, there's no problem now remaining. So you can just speak this type of words, so your mind does not follow anything what you are speaking. They it follows only the words. uh, if you are talking negative, it will take up that negative. If you are talking positive, it will take positive. So why not talk positive? Why not think about the positive things? So that is the thing which is happening now, and we are going through the second technique, that is the visualization technique. That is a very wonderful technique. Subconscious mind जो है, अगर आप visualization रोज करते हैं ना, तो इतना पावरफुली एक्ट करता है, एंड आपको लगेगा कि हाँ, आप उस परफेक्ट स्टेट में पहुंच गए हो, आप उस स्टेज पर पहुंच गए हो जहां आप पहुंचना चाहते हो. Really, you can feel that if you do it very very seriously and follow this technique. So we'll start with the visualization technique. The earliest and most obvious way to formulate an idea is to visualize it. Definitely anything you visualize it, you reach that particular thing very fast, and you get those things very fast. Visualize it means to what to do, to see it in your mind's eye. Visualize it means what? In your mind's eye, you are just observing that you are in that situation. As vividly as if it were alive. ऐसे सोचना है जैसे वो सही में हो रहा है हमारे साथ, जैसे हम नेचुरल वे में सोच सकते हैं कि वो हो रहा है, वैसे सोचना है. You can see with the naked eye only what already exists in the external world. जो external world में हो रहा है वो हम खाली देख सकते हैं अपने अभी जो हम naked eye से देख रहे हैं. But what is happening in the internal world, that we are not able to see. In a similar way, that which you can visualize it in your mind's eye already exists in the invisible realms of your mind. Any picture you have in your mind is the substance of things.
hoped for, and evidence of things not seen. What you form in your imagination is as real as any part of your body. The idea and the thought are real and will one day appear in your objective world if you are faithful to your mental image. अगर आप अपने मेंटल इमेज से इतने ज्यादा फेथफुल और ट्रुथफुल है, यू आर बिलीविंग दैट जो आप सोच रहे हो वो होगा ही, तो आप देखिए कि कैसे चमत्कार होता है, कैसे मिराकल होता है और आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं। या आप अपने बॉडी को ठीक करने के लिए विचार कर रहे हैं, तो आप उसी तरह से उसी पोजीशन में अपनी बॉडी को फ्रेश एंड फिट पाएंगे। तो ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना पावरफुल बना लेते हैं। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि आपके माइंड में कौन सी पिक्चर फॉर्म हो रही है, आपकी माइंड में कौन सा आप उसको फोटो दिखा रहे हो कि क्या चीज आपको पानी है, तो आप उसी फोटो को ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में देख पाओगे। This process of thinking forms impressions in your mind. These impressions in turn become manifested as facts and experiences in your life. और ये manifest कब होगा? जब ये एक रूप ले लेगा फैक्ट का, एक्सपीरियंस का, और आप देखोगे धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन जो है वो नजदीक आते जाएगा। Architects visualize the type of building they want. They see it as they desire it to be when completed. अगर कोई आर्किटेक्ट कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है, तो उसका डिजाइन सबसे पहले उसके माइंड पे बनता है। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले माइंड में वो डिजाइन बनेगा, तभी वो जाकर बिल्डिंग रेडी होगी। माइंड पे पहले डिजाइन, फिर वही डिजाइन वो पेपर पे उसको ड्रॉ करेगा, उसको पूरी तरह से कंप्लीट करेगा पेपर पे, एंड देन दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग विल गेट कंस्ट्रक्टेड इन physically. So that is possible how? Only when you will see that this type of things are imagined very properly, very perfectly, तभी इतनी सुंदर बिल्डिंग। हम लोग कई बार कोई कोई कंस्ट्रक्शंस की तारीफ करते हैं ना कि कितना सुंदर कंस्ट्रक्शन हुआ है, द डिजाइन इज सो ब्यूटिफुल, द बिल्डिंग इज डिजाइंड सो पावरफुली। सो वो कैसे कर पाते हैं हम? बिकॉज वी आर एबल टू सी दैट द whoever architect is there, that architect has designed it so well. That is why the construction is so beautiful, because the design which came into the architect's mind was powerful. So that is why you can see, जो वो आर्किटेक्ट इतनी सुंदर बिल्डिंग बना सकता है, तो हम क्यों नहीं अपने बॉडी को बना सकते हैं, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने कोई गोल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? वो भी तो पॉसिबल है ना। तो वही सेम वे में माइंड एक्ट करता है। कोई भी चीज जिस तरह से हम फिजिकल वर्ल्ड में कर रहे हैं, वैसे ही हम मेंटल वर्ल्ड में भी जीत पा सकते हैं। Architects visualize the type of building they want. They see it as they desire it to be when completed. Their imagery and thought processes become a plastic mold from which the building will emerge. It may be beautiful or ugly, a skyscraper or a one-story shack, but it begins as a visualization. कुछ भी बनाया गया हो, चाहे वो एक skyscraper building बनाई हो या कोई एक one storied building बनी हो, लेकिन सबसे पहले वो एक आर्किटेक्ट के माइंड में डिजाइन हुई है, उसके बाद ही वो रियलिटी में बनी है। द आर्किटेक्ट्स मेंटल इमेजरी इज प्रोजेक्टेड एज इट इज ड्रॉन ऑन पेपर। उसका जो मेंटल इमेजिनेशन है वो पेपर पे आता है, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिकली फिजिकल वर्ल्ड में आता है। Eventually, the contractor and construction workers gather the essential materials and the building progresses until it stands finished, conforming perfectly to the mental patterns of the architect. वो जिस तरह से वो आर्किटेक्ट सोचता है उसी तरह की बिल्डिंग पूरी रेडी होती है। कंस्ट्रक्टर जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वही उसी टाइप का मटेरियल लाते हैं, उसी तरह से वो स्टार्ट हो जाती है बिल्डिंग बनना, और फिर उसका जो फिनिशिंग है वो जब आर्किटेक्ट खुद देखता है तो उसको पता चलता है कि यस, उसने जो इमेजिन किया था वही चीज बहुत अच्छे से तैयार हुई है। अगर कहीं उसमें कुछ चेंज की जरूरत है तो वो भी आर्किटेक्ट बताता है उस कॉन्ट्रैक्टर को, एंड वो चेंजेस भी किए जा सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी कैन get so beautiful construction getting completed, and the building is ready. I always use the visualization technique before I speak to an audience. अगर मैं किसी ऑडियंस के सामने बोलने चाहती हूँ तो उससे पहले मैं अपने आप को विजुअलाइज कर लेती हूँ। वो ऑथर भी वैसे ही करते हैं, उन्होंने भी वही कहा कि मैं हमेशा अपने आप को विजुअलाइज कर लेता हूँ कि मैं इतनी ऑडियंस के सामने बोल रहा हूँ। I quieten the wheels of my mind so that I may present to the subconscious mind my images of thought.
एक बार थोड़ा-सा शांति से बैठ के मैं सारे थॉट्स को गैदर कर लेता हूँ कि मुझे क्या बोलना है। और फिर जब मैं लोगों के सामने जाकर पूरे ऑडियंस के सामने बोलता हूँ, तो इमीडिएटली लाइक अ पिक्चर हाउ यू सी द एंटायर मूवी, तो one by one that images come in front of my mind, and then I go on speaking it. That is the way how the person gives speech on the stage इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस, एक बड़े ऑडियंस के सामने उसी तरह से लोग स्पीच देते हैं जिस तरह से ये ऑथर ने भी कभी प्रैक्टिस किया था. I quieten the wheels of my mind so that I may present to the subconscious mind my images of thought. Then I picture the entire auditorium. एक बार पहले ये वो डिसाइड करते हैं कि मैं इतने ऑडियंस के सामने बोल रहा हूँ. फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि आई पिक्चर द entire auditorium. That entire auditorium is there in front of me, and I'm standing in front of that auditorium. Its seats are filled with men and women who are all illumined and inspired by the infinite healing presence within each one. I see them as radiant, happy, and free. पूरा वो ऑडियंस को भी विजुअलाइज कर पाते थे अपने ऑडिटोरियम में, और वो ये सोचते थे कि यस, दिस इज पॉसिबल बिकॉज आई एम स्पीकिंग एंड दे ऑल आर फीलिंग सो हैप्पी, सो stress free. They all feel that they all are free of diseases. They are not having anything. Every power which I am speaking is that vibrations is going into their body, and they are getting rid of their problems. उनकी problems जो है पूरी तरह से solve होती जा रही है. So that is the way how they were feeling, and this was the image which the T Harv Eker जो सॉरी डॉक्टर जोसेफ मर्फी जो इसके ऑथर हैं, वो इस तरह से सोचते थे, और वो यही सोचते थे कि यस, दिस इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी. तो जब उनका वो सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता जाता था, वो उसी तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते थे. Having first built up the idea in my imagination, I quietly sustain it there as a mental picture while I imagine I hear people saying, I am healed, I feel wonderful, I am transformed. This was the things which the author Dr. Joseph Murphy was seeing in his subconscious mind, that they all are telling me I'm healed, I'm wonderful, I feel wonderful, I'm transformed. All these words are spoken by the audience. That feeling they used to feel before, only before giving the speech, before giving this healing process. He already imagined everything positively. I keep this up for 10 minutes or more. I let myself know and feel that each person's mind and body are saturated with love, wholeness, beauty, and perfection. My awareness grows to the point where in my mind I can hear the voices of the multitude proclaiming their health and happiness. Then I realize the whole picture and go on the platform. Almost every time I speak, having used this technique, some people stop by afterward to tell me their prayers were answered. So, whenever he used to go, that means the author used to go on the stage, he used to visualize everything, that yes, whoever has come to listen to me, they all have got healed, they all are perfectly all right, and definitely before going to the stage he used to feel that, and when he go to the stage and he had come out of the stage, people used to come behind him and tell him. उस समय पर लोग उसके पीछे आते थे, उन ऑथर के पीछे, और आकर उनसे कहते थे कि हाँ, हम आज हील हो चुके हैं, हमारी पूरी बीमारी ठीक हो गई है, हम पूरी तरह से परफेक्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ योर प्रोसेस. तो वो जो वाइब्रेशंस है, जब वो पॉजिटिवली सोच के स्टेज पर जाते थे, ऑटोमेटिकली इट वर्कड. So that was the power of subconscious mind, which he has done in his mind first, and then it gets transferred to others' mind. So, friends, you can see that since I'm also practicing the same thing and I'm seeing the power of it, that this power is so beautiful power that in spite of the entire tiring day also, I can speak energetically, transfer the energy in all of you, those who are listening to me in a recorded session or in a live session. I'm very thankful to all of you, those who are listening to my sessions, and please comment whenever you
feel something good after listening to this session, and if you are changing your life, अगर आपको कुछ changes अपनी अपनी life में देखने को मिल रहा है, या अगर आप ऐसी टेक्निक फॉलो करते हैं और आपको कुछ चेंजेस आते हैं, तो डेफिनेटली comment in the comment box and tell me that what changes you are feeling. I will be feeling very happy after listening to your results, because really it works. So friends, do it whenever you feel anything in your physical body, anything in your mental state. You can change everything mentally as well as physically. That is the power. So we have seen the visualization technique. The next one is the mental movie method. As the old saying proclaims, a picture is worth 1,000 words. ये बहुत पहले से ही कहा जाता है कि कोई भी पिक्चर जो है, इट इज रिप्लेस्ड बाय सो मेनी वर्ड्स. हम जितने वर्ड्स किसी चीज को डिस्क्राइब करने में लगाते हैं, उससे ज्यादा एक फोटो, एक पिक्चर, एक इमेज वो कह जाती है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो इमेज हमारे माइंड पे बनती है, वो बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस का, गुड एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस का पूरा एक मिली जुली मूवी है जो हमारे माइंड में चल रही है. और वही जो है वो कंटिन्यूअसली उसको कैरी फॉरवर्ड होते ही जा रही है. वो रील अपने आप चलती जाती है. कभी हम पिछला सोचने लगते हैं, कभी हम प्रेजेंट सोचते हैं, कभी हम फ्यूचर का सोचते हैं. तो ये जो मूवी है वो चलती रहती है. तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसकी फोटोज को, उसकी पिक्चर्स को. हम में वो पावर है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं. तो हाउ वी कैन डू दैट? That is what is called as mental movie method. The fact must be stressed that the subconscious mind will bring to pass any picture held in the mind and backed by faith. Act as though I am and I will be. कैसे act करना है? Act as I am and I will be. A number of years ago, I was in the Midwest on a lecture tour that took me to several states. I wanted to have a permanent base in the area so that I could serve those who needed my help. My travels carried me far away, but I did not forget the idea of a permanent base. One evening in Spokane, Washington, I relaxed on a couch in my hotel room. I immobilized my attention. In a quiet, passive manner, I imagined that I was talking to a large audience. अचानक अपने होटल रूम में उनको ये महसूस होने लगा कि वो एक बहुत बड़े ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं. I said to those listening, I, I am glad to be here. I have prayed for this ideal opportunity. तो वो सबके सामने ये बोलने लगे कि yes, I am glad to be here. I have prayed for this opportunity which should come in my life. I saw that imaginary audience in my mind's eye and I felt the reality of it all. I played the role of the actor and dramatized this mental movie. तो मैंने उस तरह का वो जो रोल है वो प्ले किया और उसको ड्रामेटाइज किया. तो उससे क्या हुआ, जो सबकॉन्शियस माइंड था उसमें वो जो चीज है वो पूरी तरह से बैठ गई कि यस, दिस पर्सन वांट्स टू बी अ स्पीकर इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस. तो धीरे धीरे क्या होगा, यही जो चीज है जो कोई भी इंसान करना चाहता है, उसके लिए वो सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी, वो सर्कमस्टांसेस ऐसे होने लगेंगे, और आप इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ बिग ऑडियंस. जो फियर है वो भी चला जाएगा, जो वरीज है वो भी निकल जाएंगी. तो आप इसी तरह से बहुत कुछ पा सकते हैं. यस फ्रेंड्स, I played the role of the actor and dramatized this mental movie. I felt satisfied that this picture was being conveyed to my subconscious mind, which would bring it to pass in its own way. The next morning on awakening, I felt a great sense of peace and satisfaction. See friend, कितना मतलब सिर्फ एक मेंटल मूवी फॉर्म में सिर्फ इमेजिन करने से ही कितना सेटिस्फैक्शन और पीस मिला उनको. A few days later, I received a call from an organization in the Midwest. और see the opportunity. Immediately कुछ दिनों बाद ही उनको एक कॉल आया, जो एक ऑर्गेनाइजेशन से था जो मिडवेस्ट में थी, asking me to take over as director. और उनको डायरेक्टर की पोस्ट ऑफर की गई. I did so and I enjoyed several years of deeply fulfilling work there. फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे years वहां पे काम किया, because that was my
fulfillment कि मैंने वो imagine किया था and I got that. The method I have just described is often referred to as the mental movie method. तो ये जो मेथड मैंने डिस्क्राइब किया वो कौन सा है? वो है mental movie method. So three techniques we have just seen: the passing hour technique, second is visualization technique, and then the third method is the mental movie method. I have received a great many letters from people who have read my books or heard me speaking, telling me of the wonderful results they have obtained by using this technique. बहुत लोगों के इसके results मिले हैं. ऑथर भी क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा बिक चुकी है, बेस्ट सेलिंग बुक है, बहुत लोग पढ़ चुके हैं और अपना चुके हैं इस टेक्निक को. तो फ्रेंड्स, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने नहीं अभी तक फॉलो किया है, वो भी फॉलो करिए. आप देखिए कि किस तरह से आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा. One area in which the mental movie method seems especially useful is in selling property. जब आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करना है, इसमें ये मेथड बहुत फायदा करता है. If you have a home or property for sale, I suggest that you first satisfy yourself in your own mind that your price is right and fair to both you and the eventual buyer. ये आपको पहले ही अपने माइंड में पक्का कर लेना होगा कि जो प्राइस आपने रखा है वो दोनों के लिए फेयर है, for the buyer as well as you. And then, after having done this, quiet your mind, relax, let go, and get into a drowsy, sleepy stage that reduces all mental effort to a minimum. एक बार ऐसे इस तरह से सोचते सोचते आप धीरे धीरे स्लीपी स्टेट में चले जाइए, और ऐसा होते होते अगर आपको नींद आ जाती है, यू स्लीप, देन ऑल्सो इट इज गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम. Relax, let go, and get into a drowsy, sleepy state that reduces all mental effort to a minimum. Now, picture the check in your hands. Rejoice in the check. Give thanks for the check and go off to sleep, feeling the naturalness of the whole mental movie created in your mind. तो आप कैसे सोचेंगे? आप उस तरह से सोचेंगे कि यस, आपने ये डील जो बायर है उससे कर ली है, और उसने आपको चेक, आप इमेजिन कीजिए कि आपको कोई चेक दिया है, उन्होंने पेमेंट किया है वो डील के लिए, एडवांस पेमेंट, और वो चेक लेकर आप बहुत खुश हैं कि आपका जो है ये डीड जो है फाइनल हो गई है. यू हैव ऑलरेडी डन, यू हैव सेल योर प्रॉपर्टी वेरी नाइसली एंड वेरी फेयरली, एंड यू हैव got benefit out of this dealing, and the person who is buying also is benefited. So this way you can enjoy and feel that in the entire mental movie. Give thanks for that and go off to sleep, feeling the naturalness of the whole mental movie created in your mind. You must act as if this is already an objective reality. कैसे हमने एक्ट करना है कि ये सही में ऐसा हो रहा है, इस तरह से सोचना है कि yes, this is happening with me. When you do, the subconscious mind will take it as an impression. अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड में वो इंप्रेशन बैठ जाता है. Then the infinite intelligence will draw to you the buyer who really wants to have the property. तो इससे क्या होगा, जब ये आप मेंटल मूवी का एक ड्रामेटाइजेशन करेंगे, उस तरह की आप सोच रखेंगे, तो धीरे धीरे जो बायर है, जिसको चाहिए होगा ऐसा, वो अपने आप तक पहुंचेगा और आपको कॉल करेगा. Who really wants to have the property and who will love it and prosper in it. Through the deeper currents of the mind, the buyer and the seller are brought together. A mental picture held in the mind, backed by faith, will come to pass. So that is the power of mental picture, that mental movie which you have already imagined. तो उससे जो buyer है उसको भी benefit होगा. That buyer will also prosper in that property, and you will also be happy. You will be also happy with this dealing. So that is the effect of the mental movie, which you have already decided in your mind. You have already seen in your mind that yes, this is happening in with you in reality. Next technique is the Baudouin technique. Charles Baudouin was a professor at the Rocher Institute in France. He was a brilliant psychotherapist and a research director of the New Nancy School of Healing. He discovered that the best way to impress the subconscious mind is to enter into a drowsy, sleepy state. ये मैंने आपको बहुत बार बताया है फ्रेंड्स, कि आप जब भी सोएंगे उस समय पर आप कुछ भी इमेजिन कीजिए, जिस समय जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे अल्फा स्टेट में होता है, और हम उसको बहुत अच्छी तरह से इम्प्रेस कर पाते हैं. जो भी चीज हम सोच रहे होते हैं वो उसकी जैसे हम एक पेपर पे लिखते हैं, वैसे उस माइंड पर लिखी जाती है वो.
जो आप सोचते हो, जो विजुअलाइज करते हो while sleeping. So that is the best technique to follow when you are going to sleep. Before sleep, you have to do this. So the subconscious mind is to he discovered that the best ways to impress the subconscious mind is to enter into a drowsy, sleepy state, or a state akin to his sleep, in which all effort was reduced to a minimum. जिसमें आपका जो एफर्ट है वो बहुत ही मिनिमम होता है, क्योंकि आप उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करते, फियर नहीं क्रिएट करते हैं, वरीज नहीं क्रिएट करते हैं, और बस सोच के सो जाते हैं, क्योंकि आप उस समय थके होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप जो है उतना ज्यादा आर्ग्यूमेंट के स्टेट में नहीं होते, तो जो भी आप सोचते हैं वो हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सोने से पहले बहुत अच्छा सोचना चाहिए, बहुत अच्छी किताब पढ़नी चाहिए, या बहुत अच्छी बातें करके सोना चाहिए। कभी भी लड़ झगड़ के या आप गंदे विचारों के साथ, खराब मूवीज के साथ, कोई हॉरर मूवीज के साथ पहले रात को देखेंगे और फिर सो रहे, तो उसका इफेक्ट जो है बहुत बैड करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, बहुत गलत करेगा, और इस चीज का इफेक्ट जो है आगे भी नेक्स्ट डे व्हेन यू विल गेट अप उसके ऊपर भी पड़ेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि सोने से पहले हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या महसूस किया, हर चीज का हमारे माइंड पर असर होता है। Then the idea can be conveyed to the subconscious in a quiet, passive, receptive way by reflection, as Borden explained. A very simple way of securing this impregnation of the subconscious mind is to condense the idea, which is to be the object of suggestion, to sum it up in a brief phrase which can be readily graven on the memory, and to repeat it over and over again as a lullaby. जैसे हम लोग लोरी सुनाते हैं, आपको पता है ममा लोरी सुनाती है बहुत सारे बच्चों को जब वो सोते हैं, तो वो सोते हैं कैसे, जैसे वो बोलती जाती है कंटिन्यूअस, तो उस बच्चे को भी ऐसे लगता है कि वो कंटिन्यूअस वो सॉन्ग जो है वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और इतने में वो बच्चा सुनते सुनते उस चीज को थक जाता है और फिर वो सो जाता है। तो ऐसे ही आपको जो चीज चाहिए आप रिपीट करते जाइए उसको। जैसे कोई ललाबाई सॉन्ग गा रहा है, रात को सोते समय जो लोरी चल रही है वो चल रहा है, ऐसे सोच के आप वो वर्ड्स को, अपने जो पॉजिटिव वर्ड्स है या जो आपने सोचा है, व्हाट यू आर going to become or what you want, anything you desire in your life, तो ऐसा कुछ भी जो आप सोच रहे हैं वो आप बोलते हुए सो सकते हैं उस समय पे। A few years ago, a young widow in Los Angeles found herself caught up in a prolonged and bitter family dispute. Her late husband had left his entire estate to her, but his sons and daughters from a previous marriage had filed a suit to break the will. Her offers of a settlement were spurred. मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी ये लेडी, जब उनके हस्बैंड जो है जो उनको छोड़कर चले गए थे, वो सब कुछ उनको उनके ऊपर रख गए थे, बट जो बच्चे थे उन्होंने उनके साथ में बहुत गलत व्यवहार किया, और किस तरह से वो प्रॉब्लम में आ गई थी। When she asked me for my help, I explained the Borden technique to her. I urged her to condense the idea of her need into a phrase of a few words that could be easily impressed on her memory. कुछ छोटे शब्दों में ऑथर ने उनको समझाया कि आपने वो चीज जो आपको चेंज करनी है, जो आपके साथ हो रहा है, उसको आप एक छोटे से ऐसे वर्ड्स में उसको आप कंडेंस कर लो, छोटा सा एक ऐसा स्टेटमेंट और ऐसा फ्रेज बना लो जो आप बार बार बोल सको, और उससे क्या होगा कि आपकी जो सिचुएशंस है वो चेंज हो जाएंगी। A few words that could be easily impressed on her memory, जो आपकी मेमोरी पर बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। The phrase she found was, "It is finished in divine order." तो उन्होंने क्या एक सेंटेंस बनाया, "It is finished in divine order." To her, these words meant that infinite intelligence operating through the laws of her subconscious mind would bring about a harmonious conclusion through the principle of harmony. Every night for 10 nights, she sat in an armchair, systematically relaxed her body, and entered into the sleepy state. So हर रात को वो इस तरह से अपने एक रिलैक्स चेयर पे बैठती थी और ये रिपीट करती थी, "It is finished in a divine order. It is finished in a divine order." Once in a sleepy state, she affirmed slowly, quietly and feelingly the statement. और मतलब उसमें वो इतनी शांति से जब वो बोलती थी तो वो महसूस कर सकती थी उसको, और वो देखती थी कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और वो स्लीपी स्टेट में चली जाती थी। She found herself achieving a sense of inner peace because once in a sleepy state, she affirmed slowly, quietly, and feelingly the statement, "It is finished in divine order." Over and over again, बार बार बोलती थी वो।
So she found herself achieving a sense of inner peace and an all pervading tranquility. Then she went off into her deep normal sleep. और फिर उसके बाद वो एकदम normal sleep में चली जाती थी. On the morning of the 11th day, she woke up with a sense of well being and a conviction that it was indeed finished. Her attorney called her that same day. The opposing attorney and his clients were willing to settle. A harmonious agreement was reached and the lawsuit was dropped. So, whatever things were happening in a very difficult way, वो चीज़ बहुत सिंपल हो गई और उनकी जो डील थी वो एकदम डन हो गई. बहुत ही हार्मोनियस वे में, कोई झगड़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई और सारी जो सिचुएशन थी वो सॉल्व हो गई. एंड दैट टू इन द ऑन द 11th डे इटसेल्फ. 10 days she did it continuously. ये जो मेथड था उन्होंने 10 दिन तक फॉलो किया और ये जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे उनको मिले. एंड दैट वाज ही शी गॉट the perfect harmonious peaceful result on the 11th day. So that is the benefit of these techniques which we studied. So friends, we have already finished with the um, different techniques, that is passing over technique. First technique was passing over technique. Secondly, we have seen the visualization technique. Thirdly, we have seen the mental movie method. And fourthly, the Borden technique. So four techniques till now we have studied. Next technique, the sleeping technique, that we will be studying tomorrow, or we will be knowing the benefit of this technique tomorrow when we will read this further. So I think every one of you has enjoyed, those who were listening to me. And if you are now live, you can tell your name and you can talk if you have any problem, or if you have any problem you are facing now, we can discuss, or I can tell you some solution that how to follow that and get rid of that solution. That also can be done. You can tell your name or from which place you have joined, so that we can even interact on live session. Yes, who's live listening to my audio can write the name and from where you have joined. Someone listening me live. Yes. Okay, no problem. You can again listen to this complete audio as it is in on YouTube, and you will be continuously getting the recording. If you are listening, you can subscribe my channel so that you can get the um, notifications, and every day whatever I'm reading from this book and telling you the facts, those things you can again and again listen whenever you require, and you can see the changes in your life. You can get many solutions from this, friends, because many times we don't go to read that book. अगर वो बुक नहीं है आपके पास तो भी हम जो ये छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, आप देखिए कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी का भी कोई ना कोई सोल्यूशन इसमें मिलेगा. तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ बदल सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग either my live session or my recording session. I am very much thankful to you all. Thank you, friends.